Hello guys, good evening everyone. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. We are here at the channel that is Let's Crack NEET PG. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University KGMU Lucknow. I am teaching you all physiology and physiology का काफ़ी अच्छा वेटेज है. Good evening Dr. Kailash. हर साल 15 to 20 question for sure come in our NEET PG examination, so everyone clear the concept so that you can score more in your exam and you will be able to achieve your target, you will be able to achieve your dream college. Everybody, you can follow me on Unacademy. Download the Unacademy learning app from the Play Store and follow me out there. My page is unacademy.com/@kgmc. This is my page. You can follow me out there and attend many other classes. There is ongoing course. You can join it anytime by using my referral code, that is Dr. Nidhi. Various special classes are also there, so you can revise your topic as many time as you can. Good evening Dr. Mahesh. Various other renowned educators are also on this platform, so if you take the subscription you will be surely benefited. Coming to the subscription benefit, the plus subscription, if you take the plus subscription you will be able to attend daily live classes, and in live classes you can interact with your educator and clear your doubt in live session only. Various live tests and live quizzes are there. From that you can analyze your preparation. Various batch course, capsule course, rapid revision course are there. You can join it anytime. Good evening Dr. Abdul. There is a structured schedule. If you follow that schedule you will definitely able to achieve your target. Newly launched subscription है iconic subscription. In this you will be benefited with all these features of plus. Along with that you will get access for the prep ladder. In this you can access the video lecture of prep ladder, question bank 2.0, rapid revision course, and you will also be provided with handwritten notes. So if you want to avail these features also, go for the iconic subscription. Coming to the subscription fee, iconic subscription starts from 1 year. 1 year fee is 55,000, 18-month fee is 66,000, 2-year fee is 77,000, 36-month fee is 92,000. After using my referral code out here, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become more economic. Good evening Dr. Mahesh. 12-month fee will reduce to 49,500. 18-month fee will reduce to 59,400. 24-month fee will reduce to 69,300 and 36-month fee will reduce to 82,800. Good evening Dr. Gayatri. This is my referral code Dr. Nidhi. You can apply it and get instant 10% discount in your subscription, everybody. Same for the plus subscription. This plus subscription is also available for the lower duration like 1 month, 3 months and 6 months. So as per your requirement you can take subscription out here. Those who are giving the examination next year, I will suggest go for 1 year duration ताकि आपको एक enough duration मिल जाए और आप अपने सारे topics को cover कर सको. Final year student can go for 24 month or 2 year subscription. Good evening Dr. Pandey. ताकि आपको एक enough duration मिल जाए और आप अपने topic को बार बार revise कर सको. 36 मंथ का ड्यूरेशन का ले सकते हैं जो लोग फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में. मैक्सिमम ड्यूरेशन का लेंगे तो पर मंथ दे विल कॉस्ट only 1,389. So that will be more economical for all of you. 1 month fee is 5,000, 3 month fee is 12,500, 6 month fee is 22,500, 1 year fee is 27,500, 18 month fee is 32,500, 24 month fee is 40,000 and 36 month fee is 50,000. Out here also, if you take my referral code, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount in your subscription. 1 month fee will reduce to 4,500, 3 month fee will reduce to 11,250, 6 month fee will reduce to 20,250, 12 month fee will reduce to 24,750, 18 month fee will reduce to 29,250, 24 month fee will reduce to 36,000 and 36 month fee will reduce to 45,000. So that will be more economical for all of you. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi, to get instant 10% discount.
टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो मी आउट देयर. My page is NEET Physiology or you can search Unacademy Physiology. This is my page. You can follow me out there ताकि आपको क्लासेस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. ठीक है, सारे क्लासेस प्रीवियस क्लासेस के भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. चल टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी. दिस इज द लेक्चर 3rd. Today we will study about gastrointestinal hormone and हमारा digestion and absorption. First coming to the GI hormones. First part is classification. Basically GI hormone is classified in 3 categories. Gastrin, next is secretin, and the last category is other. In gastrin, we have gastrin hormone and cholecystokinin hormone. Good evening, Dr. Ambuj. In secretin family, we have secretin. We have vasoactive intestinal peptide. We have glucagon-like peptide. And we have gastrin inhibitory peptide. ठीक है, secretin family में कौन कौन से है? Secretin, vasoactive intestinal peptide, glucagon-like peptide, and gastrin inhibitory peptide. ठीक है. Last category is others. It consists of motilin, ghrelin, somatostatin, universal inhibitor है, and last is gastrin releasing peptide which is known as GRP and it is also known as bombacin. ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी होगी? Good evening, Dr. Vanessa. First category is gastrin, which consists of gastrin and cholecystokinin. Second category is secretin, which consists of secretin, VIP, GLP, GIP. ठीक है. Last category is other, motilin, ghrelin, somatostatin, and gastrin releasing peptide, which is also known as bombacin. Good evening, Dr. Akriti. This is the classification. Remember the classification. Now coming to the source of these hormones. Gastrin is secreted by G cell. ठीक है. This G cell is present in antrum region of stomach. Cholecystokinin is secreted by I cell. Secretin is secreted by S cell. GIP is secreted by K cell. Motilin is secreted by MO cell. Somatostatin is secreted by D cell. Good evening, Dr. Sonu. This is important. Remember this point, everybody. G cell secretes gastrin, I cell secrete cholecystokinin, S cell secretes secretin, K cell secrete GIP, MO cell secrete motilin, D cell secrete somatostatin. ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं डिटेल में, एक एक हार्मोन देखते हैं. First coming to the gastrin. This gastrin is produced by G cell. This G cell is present in the antrum of stomach. ठीक है. 3 isoform of gastrin are there, G35, G17 and G14, जिसमें principal form है G17. This is the principal form of gastrin and this gastrin act through cholecystokinin B receptor. ठीक है, remember this point. Gastrin act via cholecystokinin B receptors. प्रिंसिपल फॉर्म कौन सा है? G17. ठीक है. अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज स्टिमुलस दैट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिन लेवल. ठीक है. फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन इज एंट्रल डिस्टेंशन. जैसे ही फूड हमारा एंट्रम रीजन ऑफ स्टमक में आएगा, दैट विल कॉज डिस्टेंशन ऑफ एंट्रम रीजन. एंट्रम रीजन डिस्टेंड होगा, दैट स्टिमुलेट गैस्ट्रिन प्रोडक्शन. ठीक है. Next is gastrin releasing peptide, which is also known as bombacin, as the name suggests, that promote the gastrin release. ठीक है. Next factor is protein in the diet also promote gastrin release. Calcium in the diet also promote gastrin release. ठीक है. So these are the stimuli that increases the gastrin level. Is there issue for the sound?
मेरे ख्याल से सोनू आपको फ्रेश करना होगा, आपके साइड डेटा प्रॉब्लम होगी, एक बार रिफ्रेश कर लो। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। जिनके साइड प्रॉब्लम आ रही है वो रिफ्रेश कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं स्टिमुलस दैट डिक्रीजेस द गैस्ट्रिन लेवल। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज गैस्ट्रिक एसिड. दिस गैस्ट्रिक एसिड डिक्रीजेस द गैस्ट्रिन लेवल. ठीक है, somatostatin, this is the universal inhibitor, so it also inhibit the gastrin secretion. ठीक है, next is gastrin inhibitory peptide. As the name suggests, it inhibit the formation of gastrin. ठीक है, secretin, the secretin also decreases the gastrin level. important है, याद रखना सभी लोग. ठीक है, फैक्टर्स बिल्कुल याद होने चाहिए, काफी क्वेश्चंस आते हैं. Now coming to the action part. What are the action of this gastrin hormone? Gastrin hormone, the most important action is stimulation of gastric acid and pepsin secretion. ठीक है, HCl secretion and pepsin secretion is promoted by the gastrin hormone. ठीक है, इसका beside that it also has a trophic action. Trophic action क्या होता है? ये GI म्यूकोजा के ग्रोथ को प्रमोट करता है. ठीक है, this gastrin hormone increases the growth of GI mucosa which is known as trophic action. ठीक है, gastric motility कल भी हमने डिस्कस किया था, it is increased by the gastrin hormone. ठीक है, और beside that it has one another function that it stimulate the insulin production. ठीक है, एक्शन कौन कौन सा हो गया? गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन को प्रमोट करता है, जीआई मिकोजा के ग्रोथ को प्रमोट करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है एंड इंसुलिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. क्लियर है? तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर डिक्रीज कर रहे हैं, क्या एक्शन किस हार्मोन का है. प्रोसीड करें. चल अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन दैट इज कॉलीसिस्टोकाइनिन. इसका फुल नेम है कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन. ठीक है, पैनक्रियोजाइमिन भी एडेड है, इसी से इसका फंक्शन डिफाइंड होता है. कहाँ से रिलीज होता है? दिस इज रिलीज फ्रॉम द आई सेल. दिस आई सेल इज प्रेजेंट इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, बिसाइड हमारा जीआई दिस कॉलीसिस्टोकाइनिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन. ब्रेन में क्या रोल प्ले करता है अभी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल देखो कॉलीसिस्टोकाइनिन किस रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है? कॉलीसिस्टोकाइनिन ए रिसेप्टर. जबकि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था गैस्ट्रिन हार्मोन या डॉक्टर महेश ड्यूडेनम से रिलीज होता है हमारा कॉलीसिस्टोकाइनिन. कॉलीसिस्टोकाइनिन ई रिसेप्टर के थ्रू कॉलीसिस्टोकाइनिन वर्क करता है एंड कॉलीसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर के थ्रू हमारा कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? गैस्ट्रिन. ठीक है, अब आते हैं स्टिमुलस फॉर द कॉलीसिस्टोकाइनिन. गैस्ट्रिन के लिए स्टिमुलस कौन सा था? प्रोटीन इन द डाइट, कैल्शियम इन द डाइट. कॉलीसिस्टोकाइनिन के लिए स्टिमुलस है प्रोटीन एंड लिपिड इन द डाइट. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट. चल अब आते हैं फंक्शन पे. फर्स्ट फंक्शन ऑन द गट. ये जो है पैनक्रियोजाइमिन को स्टिमुलेट करता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड पैनक्रियोजाइमिन. तो पैनक्रियोजाइमिन जब स्टिमुलेट होगा तो हमारा जो पैनक्रेटिक सेक्रीशन है दैट विल बी रिच इन द एंजाइम. फ्रॉम द नेम इट सजेस्ट जाइमिन मीन्स एंजाइम, सो द पैनक्रेटिक सेक्रीशन विल बी रिच इन एंजाइम. ठीक है, एंड दैट एंजाइम विल हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है इट स्टिमुलेट द कॉलीसिस्टोकाइनिन. जब भी कॉलीसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट होगा दैट विल कॉज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाइल सिक्रीट होगा एंड दैट विल हेल्प इन लिपिड डाइजेशन. ठीक है, क्लियर हुआ? जीआईटी पे क्या रोल है हमारा? प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमारा पैनक्रिया से पैनक्रेटिक रिच या
डॉक्टर रजत, एंजाइम अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है पैनक्रियास से, बट दिस पैनक्रियोजाइमिन कॉजेज इंक्रीज इन पैनक्रियाटिक एंजाइमेटिक कंपोनेंट। या पैनक्रियोजाइमिन बहुत तरह के होते हैं, बिल्कुल अभी डिस्कस करेंगे। चलो, नाउ कमिंग टू द, हमने भी जस्ट पढ़ा cholecystokinin इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन। सो इन ब्रेन इट प्रमोट द सटाइटी सेंटर। ठीक है, सटाइटी सेंटर को प्रमोट करेगा, फूड इनटेक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, क्लियर एवरीबडी। नेक्स्ट फंक्शन, इट पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ सेक्रेटिन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन, इट डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्प्टी। ठीक है, गैस्ट्रीन हार्मोन इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्प्टी, this cholecystokinin decreases gastric emptying. This also cholecystokinin also promote mucosal growth. ठीक है, and this inhibit the gastric acid secretion. ठीक है, remember these points, they are very important. What are the role of cholecystokinin? Clear है? अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे, दैट इज सेक्रेटिन। दिस सेक्रेटिन इज सेक्रेटेड बाय द एस सेल विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये क्या करते हैं, पैनक्रिएटिक सेक्रेशन एंड बिलियरी सेक्रेशन रिच इन बाइकार्बोनेट रिलीज कराता है। ठीक है, what does secretin do? It increases the secretion of bicarbonate in both pancreatic secretion and biliary secretion. ठीक है, cholecystokinin पढ़ा था, augment करता है secretin के एक्शन को, and secretin also augment the action of cholecystokinin. ठीक है, gastric acid secretion वो भी inhibit कर रहा था, ये भी gastric acid secretion inhibit करता है. This stimulate the pyloric sphincter. This increases the biliary flow. Now coming to the stimuli that promote the secretin secretion. Protein digestion product, they stimulate the secretin production. ABG अभी हम cover करेंगे, I guess next month we will cover the ABG. Stimuli अब देखो secretin के लिए, the product of protein digestion will cause stimulation of secretin secretion from the S cell. ठीक है, acid that is coming from the stomach also stimulate the S cell to produce secretin. ठीक है, these are important, remember this point. Next hormone की बात करते हैं, gastric inhibitory peptide. This gastric inhibitory peptide is secreted via the K cell. ठीक है, this K cell is present in the intestinal crypts of liver. Good, proximal intestinal crypts में present होता है this K cell, and this K cell produce gastric inhibitory peptide. ठीक है, as the name suggests, it inhibit the gastric acid production. ठीक है, और ये इसका अदर रोल क्या है, ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम द पैनक्रियास. Remember this point, this is very important. Gastric inhibitory peptide stimulate insulin production from the pancreas. That's why it is also known as glucose dependent insulinotropic polypeptide. Because the stimulus is glucose, fat and amino acid, it is also known as glucose dependent insulinotropic polypeptide. ठीक है, क्योंकि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है. दिस इज द ओनली हार्मोन जो कि हमारे तीनों कंपोनेंट से स्टिमुलेट हो रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैट, ऑल आर स्टिमुलेटिंग द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक फैक्टर released by the K cell, stimulate insulin release from the pancreas. These all are important. Now coming to the next hormone, that is somatostatin. This somatostatin is produced by the D cell. ठीक है, this somatostatin is a universal inhibitor.
Remember this one? The somatostatin produced by D cell is universal inhibitor. It inhibits the secretion of gastrin, vasoactive intestinal peptide, glucagon-like peptide, gastrin inhibitory peptide, secretin and motilin. इन सबको ये डिक्रीज करता है. ठीक है. बिसाइड दैट क्या रोल प्ले करता है? इट इनहिबिट द सिक्रीशन, पैनक्रेटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन. इन सबको भी इनहिबिट करता है. और स्टिमुलस की बात करें तो एसिड कमिंग फ्रॉम द स्टमक स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन ऑल्सो. ठीक है. इनहिबिटरी रोल है. पैनक्रेटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है. ठीक है. क्लियर हुआ? सोमैटोस्टैटिन एवरीबॉडी. प्रोसीड करें. चल अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन ग्रेलिन. ठीक है. रिसेंट ईयर में ग्रेलिन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. दिस ग्रेलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट इन आवर स्टमक. ठीक है. और इसका क्या फंक्शन है? इट इज ओरैक्सिनर्जिक इन फंक्शन. ओरैक्सिनर्जिक मतलब ये हमारा हंगर सेंटर को प्रमोट करता है एंड इट इंक्रीजेस द फूड इनटेक. सो इट प्रमोट द हंगर सेंटर. इसीलिए इसको हम एक और नेम देते हैं. ग्रेलिन इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ हंगर और हार्मोन ऑफ फास्टिंग. ठीक है. ग्रेलिन हार्मोन बिसाइड ऑक्सीनर्जिक इट हैज अदर रोल. इट इंक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन. ठीक है. ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है. इट ऑल्सो कॉजेज लाइपोलाइसिस. These are the important role played by ghrelin. This ghrelin is orexinergic. This ghrelin increases growth hormone secretion. They promote lipolysis. ठीक है. जब भी हम फूड इनटेक करेंगे तो आफ्टर दैट क्या होगा? ग्रेलिन हार्मोन का कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब दो सिचुएशन आती है, ओबेसिटी एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा. इन ओबेसिटी क्या होगा? आफ्टर द ओबेसिटी कंडीशन हमारा ग्रेलिन प्रोडक्शन हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इन एनोरेक्सिया नर्वोसा हमारी बॉडी में आफ्टर दैट ग्रेलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. क्लियर हुआ एवरीबॉडी? ग्रेलिन हार्मोन पे रिसेंट ईयर में काफी क्वेश्चंस आए हैं बिकॉज इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक. क्लियर? प्रोसीड करें. Now coming to the next hormone which is known as motilin. This motilin is secreted by MO cell. This MO cell is present in stomach, small intestine and colon. So it is secreted from MO cell in the stomach, small intestine and colon. What is its function? It contracts the smooth muscle present in the stomach and intestine between the meal. ठीक है. दिस इज द फंक्शन ऑफ मोटिलिन. इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल लाइनिंग प्रेजेंट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. बिल्कुल ध्यान से देखना. एक एक कंपोनेंट का डाइजेशन हम देखेंगे. फर्स्ट कमिंग टू द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. हमारा जो भी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें जो फॉर्म होता है मेनली स्टार्च फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट. दैट इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है. फर्स्टली हमने फूड लिया, ओरल कैविटी में रखा. तो इन माउथ, फर्स्ट कमिंग टू द माउथ पार्ट, माउथ में हमारा सलाइवा रिलीज होता है एंड दैट सलाइवा कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. दिस इज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम which is also known as ptyalin. ठीक है. सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, ये हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. रिमेंबर दिस पॉइंट. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज
and this enzyme is deactivated when the acid is released in the stomach. ठीक है, हमारा जैसे ही फूड स्टमक में जाएगा, action of salivary amylase or ptyalin is stopped because of the presence of acid in the stomach. ठीक है, अब स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, and that gastric secretion consists of no enzyme for the digestion of carbohydrate. So there will be no digestion of carbohydrate in the stomach. ठीक है, अब हमारा आएगा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे फर्स्टली हमारा पैनक्रियास से सिक्रीशन स्टार्ट होगा and that will cause carbohydrate digestion. तो पैनक्रियास से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज. This amylase causes 95% of carbohydrate digestion. ठीक है, 95% of carbohydrate digestion कहाँ हो जाता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में in the presence of pancreatic juice. ठीक है, और ये जो pancreatic amylase है that act at the level of 1:4 alpha linkage. Remember this point. 1:4 alpha linkage पे act करता है, that's why it form disaccharide and trisaccharide. हेलो डॉक्टर प्रतिभा, ठीक है, क्लियर हुआ? पैनक्रियास से जो जूस निकल रहा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 95% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अब इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस जो कि हमारा सक्कस एंटेरिकस है, that also help in digestion of carbohydrate. That releases the enzyme which is known as disaccharidase. कौन कौन सा रिलीज होता है? maltase, lactase and sucrase. These all three act at the level of 1:6 alpha linkage. 1:6 alpha linkage पे act करेगा तो it will form monosaccharides, यानी हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एवरीबडी, किसी को कोई डाउट? माउथ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय द सलाइवरी अमाइलेज. स्टमक में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रेटिक जूस निकलता है दैट कंसिस्ट ऑफ पैनक्रेटिक अमाइलेज एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 95% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. और ये किस लेवल पे एक्ट करता है? इट एक्ट एट द लेवल ऑफ 1:4 अल्फा लिंकेजेस. इसको ब्रेक करता है एंड इट विल फॉर्म डाइसैकराइड एंड ट्राइसैकराइड. ठीक है, फिर इंटेस्टाइनल जूस भी एक्ट करेगा हमारा इंटेस्टाइन में. तो इंटेस्टाइनल जूस कंसिस्ट ऑफ डाइसैकराइडेज. ठीक है, इसमें सुक्रेस, माल्टेज और लैक्टेज होता है एंड दैट एक्ट एट द लेवल ऑफ 1:6 अल्फा लिंकेज. और इसकी वजह से क्या होगा? हमारा मोनोसेक्राइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाए. क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्लियर है एवरीबडी? चलो अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब होता है. एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन होता है दैट अकर्स मेनली फ्रॉम द ड्यूडेनम एंड जेजुनम. First coming to the glucose and galactose absorption. ठीक है, ग्लूकोज हमारा इंटेस्टाइनल सेल में इंटर करता है वाया द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. ठीक है, कौन सा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 present in the intestine and they are responsible for the uptake of glucose. Along with the glucose, sodium ion also move into the intestinal cell. And this is the example of secondary active transport. ठीक है, अब जो हमारा इंटेस्टाइनल सेल में ग्लूकोज आया दैट इज टेकन इनसाइड ब्लड वेसल. ठीक है, ब्लड वेसल में किस के थ्रू मूव करता है? वाया द ब्लड ट्यूब. ठीक है, याद रखना सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू हमारा ग्लूकोज इंटेस्टाइनल सेल में आता है एंड इंटेस्टाइनल सेल से ब्लड में जाता है वाया द ब्लड ट्यूब एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, याद रहेगा. चलो अब जो ग्लूकोज हमारा ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से इंटेस्टाइनल सेल में दैट इज वाया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1. ठीक है,
और इसके साथ हमेशा सोडियम मूव करता है. दिस फेनोमेना इज यूज्ड इन द ORS. ठीक है, ORS हम कब देते हैं? डिहाइड्रेशन के टाइम में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए. तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट के साथ ग्लूकोज भी ऐड कर देते हैं. तो अलॉन्ग विद द ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा सेल्स में एंटर हो जाता है. सो दिस इज द क्लिनिकल पार्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, क्लियर हुआ? अब ग्लूकोज के बाद बात करते हैं नेक्स्ट कमिंग टू द फ्रक्टोज एब्सॉर्प्शन. ठीक है, ग्लूकोज किससे टेक हो रहा था? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1. Fructose is taken inside the intestinal cell via the GLUT5. ठीक है, ये एग्जाम्पल था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, डायग्राम देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबको. दिस इज द डायग्राम, दिस इज द ल्यूमन साइड, इंटेस्टाइनल ल्यूमन है इस तरफ, एंड वी हैव ब्लड सर्कुलेशन आउट हियर. ठीक है, एंड दिस इज आवर इंटेस्टाइनल सेल और इंटेरोसाइट. फर्स्ट कमिंग टू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन. This glucose is taken inside the enterocyte via the sodium glucose co-transporter 1. ठीक है, and it is taken inside the systemic circulation via the GLUT2. ठीक है, next coming to the fructose. This fructose is taken inside the enterocyte via the GLUT5, and this is again taken into the systemic circulation via the GLUT2. ठीक है, क्लियर हुआ? सारे ट्रांसपोर्टर याद होने चाहिए. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे लिए है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1. फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी हैव GLUT5. ठीक है, बेजोलैटरल एंड पे हमारा GLUT2 प्रेजेंट होता है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फ्रॉम इंटेरोसाइट टू द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? प्रोसीड करें. चलो, अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं, दैट इज प्रोटीन डाइजेशन. ठीक है, फर्स्ट हमारा फूड कहाँ आएगा? माउथ में. इन ओरल कैविटी वी हैव नो एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, इन स्टमक वी हैव द पेप्सिनोजन, द इनएक्टिव फॉर्म. रिमेंबर this pepsinogen in the presence of hydrochloric acid converted into the pepsine, and this pepsine cleave the peptide bonds. ठीक है, यानी स्टमक में हमारा प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, अब आते हैं हमारा इंटेस्टाइन में पैनक्रेटिक सिक्रीशन होगा, एंड दैट पैनक्रेटिक सिक्रीशन कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज. These all are present in the form of zymogen, यानी inactive form में present होता है pancreas में, and when it come to the intestine, it is converted into its active form. ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इंडोपेप्टाइडेज है. इंडोपेप्टाइडेज का मतलब that break the peptide bond from the interior region. ठीक है, तो जब भी इंडोपेप्टाइडेज वर्क करेगा तो हमारा बनता है डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड. और एक्सोपेप्टाइडेज कौन कौन सा है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज. यानी ये हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा फ्रॉम द एंड रीजन, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज वर्क करेगा, वी विल हैव फ्री एमिनो एसिड्स. क्लियर हुआ? बिल्कुल ध्यान से देखना. दिस इज द डायग्राम फ्लो चार्ट. स्टमक से रिलीज होता है पेराइट. फ्रॉम स्टमक वी हैव पेराइटल सेल दैट रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वी हैव चीफ सेल which release pepsinogen. This pepsinogen in the presence of hydrochloric acid converted into the pepsine. ठीक है, जितने भी जाइमोजेन है यानी जितने भी
एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ सम अमीनो एसिड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। zymogen are converted into its active form by removal of some amino acids। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एसिडिक एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर रिमूव्ड। ठीक है, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बस आपको ये याद रखना है कि इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, बाय रिमूवल ऑफ सम अमीनो एसिड्स। ठीक है, पैनक्रियाज से भी हमारा जो एंजाइम निकलता है, दैट इज अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ zymogen टू प्रिवेंट द ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज, ऐसा होता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेरोपेप्टाइड्स। दिस इंटेरोपेप्टाइड्स इज रिलीज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ है, दैट विल हेल्प इनटू कन्वर्जन ऑफ काइमोट्रिप्सिन इनटू काइमोट्रिप्सिनोजेन इनटू काइमोट्रिप्सिन, प्रो इलास्टेज इनटू इलास्टेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, एंड दैट विल cause protein digestion। ठीक है, क्लियर हुआ? तो प्रोटीन डाइजेशन मेजर कंपोनेंट हमारा पैनक्रियाज सिक्रीशन के थ्रू होता है। क्लियर एवरीबडी? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है एमिनोपेप्टाइडेज, दैट आल्सो हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? प्रोसीड करें। प्रोसीड करें। चल, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हम प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड एब्जॉर्प्शन पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो भी रिलीज हो रहा है, दैट आर इन द इनएक्टिव स्टेट, और वो एक्टिवेट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। ठीक है, प्रोटीन पे पेप्टाइडेज वर्क करेगा। We will have dipeptides and tripeptides। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कौन सा ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है। पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, पेप्टी, इट इज पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर। ये हमारा डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को इंटेस्टाइनल सेल में मूव करता है, एंड अलोंग विद दैट हाइड्रोजन आयन आल्सो मूव इनसाइड द एंटेरोसाइट्स। ठीक है, यही H+ आयन अगेन ट्रांसफर्ड आउट by the exchange of sodium using sodium hydrogen exchanger। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीजेस के एक्शन में दिस डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड आर ब्रोकन टू द अमीनो एसिड्स। ठीक है, और यही अमीनो एसिड हमारा ब्लड वेसल में मूव करेगा वाया द बेसोलैटरल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? Dipeptide tripeptide is taken inside the intestinal cell via the peptide transporter. Along with that, hydrogen ion also move inside. This hydrogen ion is again taken out, transferred out with the exchange of sodium ion, and that occurs with the help of sodium hydrogen exchanger। ठीक है, अब ये जो डाइपेप्टाइड इंटर किया है, दैट अंडर द एक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीजेस एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कराता है, and this amino acid is taken inside the blood vessel via the basolateral amino acid transport। ठीक है, डायग्राम देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस इज पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर। Dipeptide and tripeptide is taken inside the enterocyte. This is epithelial cell of small intestine. This is the lumen part, and here we have blood vessel। ठीक है, पेप ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड को सेल में, इंटेरोसाइट में इंटर कराएगा। Along with that, hydrogen ion also move inside the cell to push the hydrogen ion again to the lumen। we have hydrogen sodium exchanger। ठीक है, एक्सचेंज में क्या होता है, सोडियम आयन मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जो डाइपेप्टाइड है एंड ट्राइपेप्टाइड है, इस पे एक्ट करता है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीजेस।
Under the action of cytoplasmic proteases, this dipeptide and tripeptide is converted into the amino acid. ठीक है, and this amino acid is sent to the blood via the basolateral presence of amino acid transporter. ठीक है, क्लियर हुआ? सारे चैनल्स याद होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर हुआ एवरीबडी? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लियर है? अगर क्लियर है तो गिव मी थम्स अप ताकि मैं प्रोसीड कर सकूं. किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. चलो, किसी को रिप्लाई नहीं करना, प्रोसीड करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. हमारा जो डाइट है उसमें जो लिपिड होता है दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, अब हम इसके डाइजेशन पे बात करते हैं. तो फर्स्ट कमिंग टू द माउथ. इन माउथ वी हैव सलाइवा एंड सलाइवा कंसिस्ट ऑफ लिंगुअल लाइपेज. ठीक है, माइनर सा रोल प्ले करता है. It play a minor role in lipid digestion, but this is the enzyme also present in our saliva. Next coming to the stomach, हमारा फूड आएगा स्टमक में. इन स्टमक वी हैव गैस्ट्रिक लाइपेज. ठीक है, इन पैनक्रियाज बस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा फूड एंड देयर इट इनकाउंटर विद द पैनक्रेटिक सेक्रीशन. ठीक है, तो पैनक्रियाज से रिलीज होगा पैनक्रेटिक लाइपेज, कोलाइपेज एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज. All these are important for the lipid digestion. Most important is pancreatic lipase. Remember these points, everybody. Now coming to the next part, that is how this is absorbed. Triglyceride के फॉर्म में हमारे फैटी एसिड प्रेजेंट होता है डाइट में. इस पे एक्ट करेगा लाइपेज, ऑल फॉर्म ऑफ लाइपेज, कोलाइपेज, ईस्ट्रेज, एंड वी विल हैव मोनोग्लिसराइड यानी फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, हमारा कोलेस्ट्रॉल सेपरेट हो जाएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन सेपरेट हो जाएगा. अब है ना, ये क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट, दिस फ्री फैटी एसिड फॉर्म मिसल. ठीक है, दिस मिसल इज हैविंग द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड. ठीक है, मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस मिसल कम टू द क्लोजर टू द म्यूकोसल सेल and it is taken inside the mucosal cell, and this occur via the process of passive diffusion. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? हमारा जो फैटी एसिड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दैट इज अकरिंग वाया द पैसिव डिफ्यूजन, जबकि अमीनो एसिड का जब एब्जॉर्प्शन हो रहा था दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. ठीक है, वो एक्टिव प्रोसेस था, ये पैसिव प्रोसेस है. क्लियर हुआ एवरीबडी? चलो, अब जो फ्री फैटी एसिड म्यूकोजल सेल में इंटर किया है दैट रीस्टैब्लिश्ड एंड फॉर्म द ट्राइग्लिसराइड, एंड दिस ट्राइग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन फॉर्म द chylomicrons, and this chylomicron is taken into the lymphatic circulation. ठीक है, दैट्स हाउ हमारा लिपिड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स. क्लियर एवरीबडी? चल, दिस इज द डायग्राम. हमारा ट्राइग्लिसराइड विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इट फॉर्म द मिसल्स, एंड व्हेन मिसल कम near the mucosal cell it is taken inside the cell and undergo and form triglyceride. ठीक है, और गोल्गी apparatus से प्रोटीन रिलीज होगा दैट विल कवर द ट्राइग्लिसराइड एंड फॉर्म द chylomicron, and this chylomicron into the lacteals. ठीक है, and this is transported to the intestine.
ठीक है, इंटेस्टाइन से ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ फैट का एब्जॉर्प्शन एवरीबडी? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड? फर्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, दिस फैट शॉर्ट चेन फैटी एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डाइट। ये हमारा बैक्टीरियल कोलोन, ठीक है, कोलोनिक बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल इट प्रोड्यूस एसिटेट, प्रोपियोनेट एंड ब्यूटारेट. These all are short chain fatty acid which is produced by the colonic bacteria. And what are the function of short chain fatty acids? It also play in the growth of GI mucosa. Trophic action जो करता है. It help in acid base balance. ठीक है? And it prevent the inflammation. These all are the important role played by the short chain fatty acids. ठीक है, remember this point. ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड मेजर जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट ऑल्सो अकर फ्रॉम द कोलोन ओनली. प्रोड्यूस भी कोलोन में होता है, एब्जॉर्प्शन भी इसका कोलोन में होता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. क्लियर है? प्रोसीड करें. चलो नाउ कमिंग टू द विटामिन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी इज फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन ए, डी एंड ई, के. ठीक है, ये जैसे कि हमारा फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जा रहा था मिसल के फॉर्म में, इसी तरह ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है. जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो भी हैं दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है, याद रहेगा. फैट सॉल्युबल विटामिन कैसे एब्जॉर्ब होता है? इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स. एंड वाटर सॉल्युबल आर एब्जॉर्ब बाय द सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स. इसमें एक्सेप्शन है विटामिन B12 एंड फोलेट. क्लियर एवरीबडी? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आयरन एब्जॉर्प्शन. रिमेंबर दिस पॉइंट. द मेजर साइट ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इज duodenum. Beside duodenum, the iron absorption also occurs in the jejunum part, but the major site is the duodenum. ठीक है, डाइटरी फॉर्म में हमारा आयरन किस फॉर्म में होता है? इन डाइट वी हैव आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक फॉर्म, दैट इज Fe3+. जबकि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है फेरस फॉर्म, दैट इज Fe2+. ठीक है, अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में किस तरह आयरन एब्जॉर्ब होगा. बिल्कुल ध्यान से देखना. This ferric form is converted into the ferrous form in the presence of ferric reductase. ठीक है, ये ferric reductase enzyme convert करेगा ferric form को ferrous form में, and this ferrous form is transported into the cell via the transporter that is divalent metal transporter. ठीक है, याद रहेगा कौन सा ट्रांसपोर्टर? डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू फेरस इज टेकन इनसाइड द इंटेरोसाइट. ठीक है, अब इंटेरोसाइट में क्या होता है? दिस फेरस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द फेरिक फॉर्म एंड इट इज स्टोर्ड एज अ फेरेटिन. ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन. ठीक है, एंड द रिमेनिंग फेरस फॉर्म जो कि फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, स्टोर नहीं हुआ, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट थ्रू द बेसोलैटरल एंड, और ये होता है वाया द फेरोपोटीन. बिल्कुल याद होना चाहिए कौन कौन से चैनल प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. स्टोर्ड फेरेटिन के फॉर्म में हो रहा है एंड द रिमेनिंग फेरस फॉर्म इज ट्रांसपोर्टेड आउट वाया द फेरोपोटीन. ठीक है, ये तो हमारा डाइटरी आयरन की बात हो गई. hemoglobin part also consists of iron. ठीक है, तो this heme enter into the intestinal cell and this is converted into the ferrous form and this is again taken inside the cell via the divalent metal transporter. ठीक है, सीक्वेंस सेम हो जाएगा आगे जाके. अब बात करते हैं फेरोपोटीन के थ्रू फेरस फॉर्म हमारा बेसोलैटरल एंड से बाहर आएगा and that ferrous form is again converted into the ferric form via the hephaestin.
This hephaestin convert the ferrous form again into the ferric form, and this ferric form move into the blood vessel and transported with the transferrin. ठीक है, क्लियर हुआ? 2-4 टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, फेरोपोटीन, हेफास्टिन, ट्रांसफेरिन. ठीक है, डायग्राम देखो, क्लियर हो जाएगा. हमारा जो आयरन है फूड आयरन हो जाएगा और हीम आयरन और नॉन हीम आयरन. ठीक है, तो हमारा डाइट में किस फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है? हमारा फेरिक फॉर्म में होता है. ठीक है, और एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है. सो दिस फेरिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द फेरस फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक रिडक्टेज. ठीक है, फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज टेकन इनसाइड द सेल वाया द डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1. ठीक है, अब ये फेरस फॉर्म अगेन कन्वर्टेड इनटू द फेरिक फॉर्म एंड इज स्टोर्ड एज अ म्यूकोजल फेरेटिन. ठीक है, एंड जो कंपोनेंट हमारा फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा दैट इज टेकन अगेन पुश्ड आउट वाया द फेरोपोटीन. ठीक है, फेरोपोटीन से हमारा फेरस फॉर्म बाहर आ गया एंड दिस हेफास्टिन, दिस इज द हेफास्टिन मॉलिक्यूल. This hephaestin convert again the ferrous form into the ferric form, and this ferric form is taken inside the blood vessel and transferred in the form of plasma transferrin. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है अभी तक? प्रोसीड करें. चल, दिस इज द सेम डायग्राम. हमारा डाइटरी फॉर्म इज फेरिक फॉर्म विच इज कन्वर्टेड इनटू फेरस फॉर्म. ठीक है, एंड इट इज टेकन इनसाइड द सेल वाया द ट्राइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, एंड दिस फेरस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द फेरिक फॉर्म इनसाइड द सेल. ठीक है, एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन. ठीक है, एंड दोज मॉलिक्यूल विच आर नॉट ट्रांसफर्ड इनटू द फेरस फॉर्म, फेरिक फॉर्म, they are sent outside via the ferroportin. ठीक है, this is ferroportin. ठीक है, हेफास्टिन के प्रेजेंस में क्या होता है? This ferrous form is again converted into the ferric form, and this ferric form is taken inside the blood vessel and it is transferred via the transferrin. क्लियर हुआ एवरीबॉडी? अब आते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है that is hepcidin. This hepcidin blocked the ferroportin, so it hampered the absorption of iron. This hepcidin molecule क्या करता है? अभी डिस्कस करेंगे. This hepcidin molecule hamper the iron absorption. Now coming to the next parameter, that is factor affecting the iron absorption. There are some factors that increase iron absorption are the vitamin C. There are some factors that decrease iron absorption are tannins, phthalates and oxalates. These three molecule decreases the iron absorption. ठीक है, clinical part बिल्कुल याद रहना चाहिए. Hepcidin that is released from the liver. This hepcidin decreases the iron absorption because it internalize and cause destruction of ferroportin. ठीक है, फेरोपोटीन हमारा इंटरनलाइज हो जाएगा या डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो डाउन रेगुलेट हो जाएगा इस रिसेप्टर का. सो हमारा फेरस विल नॉट पुश्ड आउटसाइड. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आयरन अब्सॉर्प्शन विल डिक्रीज. क्लियर हुआ? बिल्कुल याद रहेगा सबको. प्रोसीड करें. चल, सो व्हेनेवर देयर इज हेप्सिडीन म्यूटेशन there is iron overload and that result into hemochromatosis. ठीक है, चलो अब देखो वाटर एब्जॉर्प्शन पे. जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, मेजर रीअब्जॉर्प्शन अकर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. Around 8 liters of water is reabsorbed from small intestine.
एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का किस पार्ट से? जेजुनम पार्ट से. Around 88 liter of water is reabsorbed from the jejunum part. ठीक है, कुछ reabsorption हमारा कोलॉन में भी होता है. Around 1250 ml is absorbed from the colon, but the major absorption is from the jejunum, that is 8 liter. ठीक है, डेटा याद रहेगा, पार्ट याद रहेगा everybody. चल, now coming to the summary part. Iron absorption कहाँ कहाँ से होता है? फ्रॉम द duodenum एंड फ्रॉम द jejunum. ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन मोस्टली हमारा jejunum से होता है. ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारा कोलॉन में, कोलोनिक बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होता है एंड वहीं पे इसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, विटामिन B12, रिमेंबर दिस पॉइंट, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है. विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? फ्रॉम द इलियम. ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम. ठीक है, मेजर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम द जेजुनम पार्ट. ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? अब क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Which of the following statement regarding secretin is least correct? Option A, increase bicarbonate rich secretion. Option B, inhibit gastric acid secretion. Option C, increases gastric acid secretion. Option D, causes contraction of pyloric sphincter. Everybody answer this question. Which of the following statement regarding secretin is least correct? सेक्रेटिन हार्मोन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करता है. सो आंसर इज सी. ठीक है, क्लियर डॉक्टर अब्दुल? नेक्स्ट क्वेश्चन. All are true about secretin except option A, inhibit gastric emptying. Option B, increases bicarbonate rich pancreatic secretion. Option C, potentiate action of cholecystokinin. Option B, increases bile salt and bile acids. Option E, increase bile secretion. चलो everybody answer this question. All are true about secretin except. वेरी गुड डॉक्टर अब्दुल, आंसर इज डी. ठीक है, बाइल सिक्रीशन, पैंक्रेटिक सिक्रीशन सबको इंक्रीज करता है, बट बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करता है. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू अबाउट सेक्रेटिन इज ऑप्शन ए, इंक्रीज गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रेटिक सिक्रीशन. ऑप्शन बी, इंक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन. ऑप्शन सी, गैस्ट्रिक हाइपरमोटिलिटी. ऑप्शन डी, इंक्रीज एंजाइम रिच पैंक्रेटिक फ्लूइड. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी? आंसर दिस क्वेश्चन. ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्रेटिन इज. Everybody answer this question. Very true, Dr. Abdul. Answer is E. Next question. All are the action of cholecystokinin except option E, relax lower esophageal sphincter. Option B, increase pancreatic secretion. Option C, increase gastric secretion. Option D, causes gallbladder contraction. Chalo, everybody answer this question.
All are the action of cholecystokinin except. Very good, both of you. Answer is increase gastric secretion. Next question. Fat in the duodenum lumen stimulate gallbladder contraction, inhibit gallbladder contraction, inhibit cholecystokinin secretion. Option D, releases secretin. Everybody answer this question. फैट इन द duodenal lumen stimulate gallbladder contraction. जैसे ही फैट रिच डाइट हमारा duodenum में रिच करेगा, that stimulate gallbladder contraction ताकि हमारा bile salt release हो, bile acid release हो, and that will cause digestion of fat and absorption of fat. So answer is A. Very good. Next question. Gallbladder contraction is stimulated by gastrin, secretin, vagus, cholecystokinin. Everybody answer this question. Gallbladder contraction is stimulated by. Very good, Dr. Uttam. Answer is both vagus and cholecystokinin. Vagus हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा प्रमोट करता है. इन जीआई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रमोट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो वेगस हमारा स्टिमुलेट करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन भी स्टिमुलेट करता है. अगर ऑप्शन एक ही सेलेक्ट करना होगा तो द मेजर फैक्टर इज कोलिसिस्टोकाइनिन. ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट, सी एंड डी. इफ यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन देन आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्सेप्ट alpha-1 antitrypsin, alpha-1 antiproteinase. Option C, enterokinase. Option D, egg white. Everybody answer this question. All of the following are trypsin inhibitor except. ठीक है, इंटेरोकाइनेज हमारा ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. इट इज नॉट अ इनहिबिटर. रिमेंबर दिस पॉइंट. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीप्रोटीज, एग वाइट, ऑल आर ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग जीआई हार्मोन बिलोंग टू द सेक्रेटिन फैमिली एक्सेप्ट. ऑप्शन ए सेक्रेटिन, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन, जीएलपी. ठीक है, cholecystokinin and vasoactive intestinal peptide. Everybody answer this question. All of the following hormone belongs to secretin family except. Very good everyone. हमारा gastrin and cholecystokinin are belong from the gastrin family. Secretin, glucagon like peptide, vasoactive intestinal peptide, all these belong to the secretin family. ठीक है, क्लासिफिकेशन याद है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following hormone doesn't act on pancreas? Secretin, gastrin, cholecystokinin, GIP. Everybody answer this question. Which of the following hormone doesn't act on pancreas? Very good, Dr. Sonu. Answer is B. Very good, Dr. Abdul. Answer is B. ठीक है, secretin, cholecystokinin, GIP all act on the pancreas except gastrin. Next question. Which of the following is a primary site for the production of gastrin?
ऑप्शन ए पाइलोरस, ऑप्शन बी एंट्रम, ऑप्शन सी पैनक्रियास, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following is the primary site for the production of gastrin hormone? Gastrin is produced by, very good Dr. Uttam, हमारा G cell से produce होता है gastrin hormone, and this G cell are present in the antrum region. Next question. Iron is actively absorbed in stomach, duodenum and proximal jejunum, large intestine and ileum. Everybody answer this question. Iron is actively absorbed in. जल्दी जल्दी आंसर करो. Iron is actively absorbed in. Very good, Dr. Abdul. Answer is duodenum and proximal jejunum. Next question. The amount of water absorbed in the intestine in a day is 5 liter, 1 liter, 10 liter, 8 liter. Everybody answer this question. आज ही डिस्कस किया था हमने. Amount of water absorbed in the intestine in a day is. Very good everyone. Answer is 8 liter. 8 liter absorb होता है हमारा intestine से. Maximum water reabsorption in the gastrointestinal tract occurs in stomach, jejunum, ileum, colon. Shall everybody answer this question? Major water reabsorption occurs in which part? Very good. हमारा जो maximum reabsorption होता है water का, that occurs from the jejunum. Next question. Receptor for the absorption of vitamin B12 intrinsic factor complex is located in. Option A ileum, option B duodenum, option C transverse colon, option D descending colon. Vitamin B12 absorption के लिए जो receptor है that is located in. Everybody answer this question. Very good. Answer is E. ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन जिपमर में भी और भी वेरियस एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद होना चाहिए. विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन हमेशा इलियम से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब्ड इन. Option A duodenum, option B colon, option C ileum, option D jejunum. Everybody answer this question. Short chain fatty acid produced by bacteria are maximally absorbed in. Very good. हमारा कोलॉन में ही प्रोड्यूस होता है एंड कोलॉन में ही इसका एब्जॉर्प्शन होता है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेप्सिडीन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर टू इनहिबिट द आयरन एब्जॉर्प्शन. ऑप्शन ए डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, फेरोपोटीन, हेफास्टीन, ट्रांसफेरिन. चलो एवरीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन. Hepcidin act on which receptor to inhibit iron absorption? वेरी गुड. फेरोपोटीन. फेरोपोटीन का डिस्ट्रक्शन या इंटरनलाइजेशन करता है हेप्सिडीन मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट. द एंजाइम डिफिशिएंट इज लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन. चलो एवरीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन. इजी है ये तो.
A man cannot digest carbohydrate, तो enzyme कौन सा deficient होगा? Very obvious, हमारा amylase enzyme will be absent. Next question. All are secreted in the zymogen form except option A pepsin, option B trypsin, option B lipase, option D co-lipase. Everybody answer this question. All are secreted in the zymogen form except. No, answer is not B. Trypsin is also secreted in the form of trypsinogen, which is a zymogen. Pepsin is secreted in the form of pepsinogen. ठीक है, आंसर इज लाइपेज. ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में नहीं रिलीज होता है. दिस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव फॉर्म. सो आंसर इज सी, लाइपेज. Co-lipase is also a zymogen form. ठीक है, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Trypsinogen is converted into trypsin by option A combination of two molecules of trypsinogen, phosphorylation, removal of few amino acid from trypsinogen, option D addition of alkyl group. Everybody answer this question. Trypsinogen is converted into trypsin by. Everybody answer this question. Very good everyone. Answer is few amino acid remove होता है तो जाइमोजन कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में. सारे जाइमोजन के लिए यही एप्लीकेबल है. ठीक है, प्रोसीड करें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर एंडोपेप्टाइडेज एक्सेप्ट trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase. Everybody answer this question. All are endopeptidase except. Very good, Dr. Abdul. Answer is carboxypeptidase, which is a exopeptidase. Chalo, next question. Salivary amylase is activated by sodium ion, potassium ion, bicarbonate ion, and chloride ion. Everybody answer this question. Salivary amylase is activated by. Very good. Answer is chloride. In the presence of chloride ion, salivary amylase हमारा activate होता है. ठीक है, next question. Digestion of disaccharides occur at option A mouth, option B stomach, option C small intestine, option D large intestine. चलो, everybody answer this question. Digestion of disaccharides occurs at very good. Answer is small intestine. Small intestine से release होता है succus entericus that release disaccharidase. And that are maltase, lactase, sucrase. ठीक है, and that cause digestion of disaccharides. So answer is C, small intestine. Next question. Which disaccharide is not broken down in the GIT? Lactulose, maltose, sucrose, lactose.
Which disaccharide is not broken down in the GIT? Everybody answer this question. Answer is A, lactose. Lactulose is the non-absorbable carbohydrate. So it is only used for the treatment of constipation. ठीक है? So this is not broken down in the GIT. Maltose, sucrose, lactose, all are disaccharide which is broken down in our GIT by the maltase, sucrase, lactase. ठीक है? Next question. Pepsin is activated by enterokinase, hydrochloric acid, uropepsinogen or trypsinogen. Easy है question ये तो. Everybody answer this question. Pepsin is activated by. Very good. Answer is hydrochloric acid. Next question. Trypsinogen is converted into the trypsin by pepsin, enterokinase, hydrochloric acid. None. ये भी easy है. Everybody answer this question. Trypsinogen is converted into trypsin by. Very good. हमारा enterokinase small intestine से release होता है, that convert trypsinogen into trypsin. Next question. All have significant role in the digestion of fat except option A, pancreatic lipase, option B, co-lipase, option C, lingual lipase, option D, bile salt. Everybody answer this question. बाइल सॉल्ट मेजर रोल प्ले करता है डॉक्टर अब्दुल. बाइल सॉल्ट मेजर रोल प्ले करता है फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो आंसर इज नॉट डी. हमारा लिंगुअल लाइपेज. वेरी गुड डॉक्टर सोनू. लिंगुअल लाइपेज हमारा माउथ में भी लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज लिंगुअल लाइपेज, बट इट हैज नो सिग्निफिकेंट रोल. माइनर सा रोल प्ले करता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पैनक्रियाटिक लाइपेज दैट डाइजेस्ट लिपिड रिक्वायर्ड. ठीक है. विटामिन B12, pyridoxine, tocopherol, co-lipase. Pancreatic lipase that digest lipid requires. Everybody answer this question. Pancreatic lipase that digest lipid requires. Very good. Answer is co-lipase. Pancreatic lipase in the presence of co-lipase act on the lipids. Next question. Main enzyme involved in digestion of fatty acid. Lingual lipase, gastric lipase, pancreatic lipase, phospholipase. The major role played by which lipase? Everybody answer this question. Very good, Dr. Abdul. Answer is pancreatic lipase. The major role is played by pancreatic lipase. Next question. Database question है, याद रखना होगा आपको. देखते हैं किसी को आंसर पता है. Pancreatic lipase hydrolyze ester linkage of triglyceride at position 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, only 3. Everybody answer this question. Pancreatic lipase hydrolyze ester linkage of triglyceride at position 1, 2, 3. Everybody answer this question. Answer is B. ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा. Pancreatic lipase कहाँ एक्ट करता है? 1 and 3. Next question. The amount of protein undigested in the small intestine is.
ठीक है, 1 to 5%, 10 to 20%, 5 to 10%, 25 to 30%. Everybody answer this question. The amount of protein undigested in a small intestine is. वेरी गुड एवरीवन. हमारा जो 95% ऑफ प्रोटीन डाइजेशन है दैट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. 95 to 99% डाइजेस्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिवली एब्जॉर्ब्ड इन द गट? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लिपिड, अमीनो एसिड. एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following is passively absorbed in gut? Excuse me. देखो, glucose, fructose is taken via the sodium glucose co-transporter 1 or GLUT4. ठीक है, ये क्या है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. Amino acid is also transported via the active transport. ATP is required. लिपिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिसल. जैसे ही मिसल हमारा म्यूकोजल सेल के पास आता है देयर अकर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो आंसर इज बी. ठीक है, क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडियम पोटेशियम पंप इज एसेंशियल फॉर एक्टिव इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फोलिक एसिड, एमिनो एसिड, bile salts, fatty acids. Everybody answer this question. Sodium potassium pump is essential for active intestinal transport of. Answer is amino acid. रिमेंबर, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अलोंग हमारा हाइड्रोजन आयन ऑल्सो मूव इनसाइड. दैट हाइड्रोजन आयन इज पुश्ड अगेन बाय द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन पंप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेक्शन ऑफ विच इंटेस्टाइनल सेगमेंट विल कॉज मार्क्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी सिग्मॉइड. एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. Resection of which intestinal segment cause marked electrolyte imbalance? Answer is duodenum. Major electrolyte reabsorption occurs from the duodenum. ठीक है, डायग्राम देखना, आज डिस्कस किया था हमने. ड्यूडेनम से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब होते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइट imbalance will occur in the case of resection of duodenum. Next question. Iron absorption take place in which part of intestine? Duodenum, ileum, jejunum, colon. Everybody answer this question. Iron absorption take place in which part of intestine? मेजर जो आयरन रीअब्जॉर्प्शन होता है दैट अकर्स फ्रॉम द duodenum. Some part of iron reabsorb from the proximal part of jejunum also. The major component of iron is reabsorbed from the duodenum. So the answer will be A. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर सकते हैं. रेगुलर मेहनत करते रहिए, यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट.
ठीक है, जितना ज़्यादा आप MCQ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम विल इंक्रीज. ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए. यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम विद गुड ट्रैक एवरीबडी. ठीक है, चलो, that's all for today. Thank you so much for joining. Lastly, again, if you and any friend of you is willing to take subscription, do refer my referral code Dr. Nidhi to get instant 10% discount in subscription. ठीक है, this code is valid for each and every examination, so do refer my referral code everybody. Most welcome Dr. Sonu. ठीक है, कल का सेशन same time 5 PM. Tomorrow we will have the last session of GIT, that is GIT 4. कुछ मिसलेनियस टॉपिक बच गए, उसे कल हम कवर कर लेंगे. ठीक है, रेगुलर मेहनत करते रहिए. ऑन द पॉजिटिव नोट, आई एम एंडिंग द क्लास.